All right. Hi, everybody. Good afternoon. Welcome to EduMart. Welcome to your class here, where your session here, where we're talking about CMA. And in CMA, we're going to talk about all of the details that are necessary for you to understand the program in its full entirety, right? But before I get into any of that, I'd like to quickly introduce everybody who's involved in the production of this webinar here on a Sunday at 4:30. So to start with, we have Mohit on our host PC. So Mohit is our senior most program advisor, and if you have any questions, anything you want to ask, put it in the chat. Mohit will respond to you. He's also being joined by a co-panelist, Saurabh Mathur, who is also our head of operations. So he also understands all of the functional and important aspects of CMA. So if you have any questions that he can answer, he will also respond. So chat में questions डालो. And again, this is not a physical session. We're not doing this in a hotel conference room or in an auditorium. वरना वहां तो audience का reaction देख के पता चल जाता है कैसा है. यहाँ नहीं पता चलेगा. So please feel free to put things in the chat because that's my only reference points. That's the only way with which I will be able to judge कि आपको समझ में आ रही है बात, सही लग रही है, नहीं लग रही है, agree कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, that sort of thing. So please feel free to use the chat. And also we have Himanshu behind on the camera, who is in charge of the camera, the lighting, making sure everything works fine, works well, the hardware works well, and also the post edit of the video, the recording, the lecture, whatever it could be. That's Himanshu. My name is Rohan. I am Rohan Chopra, a CPA and a CMA. And I am also the primary faculty here at EduMont. So I'm sort of the head faculty here. And I recently became India's first CPA and CMA to have his own TED Talk. So that was quite a learning experience for me as well. And I really enjoyed that moment, that accomplishment. But with that being said, मैं ये भी जानना चाहता हूँ अब कि आप लोग कौन हो. So let's ease up a little bit. Let's talk about you. So Mohit, there's a poll. Let's quickly release that poll for everybody. Everybody who's in the webinar can participate, can take part in this poll, give us the answers. In fact, आप answers दे दोगे तो हम जल्दी move out कर देंगे. So I'll just hold for a minute or two while you fill in these 3 simple questions that just talk about your basic education background. That's it. So just fill that in and then we'll move ahead based on the results. Do we have a responses, Mohit? Yeah, good. Can we have them come more quickly? Everybody, please. जितना जल्दी आप भर दो उतनी जल्दी हम आगे बढ़े. Done. Well, let's just end it right there. जिन्होंने नहीं वोट किया शायद उनको पोल नहीं दिख रहा होगा whatever. If there is such an issue that you can't see the poll questions or anything, let us know. Now on the screen I can see, and Mohit will have to help me out a little bit in this as well because I can't read from that far off. So what about class 12th? How many people came from a commerce background? Mohit? 86%. 86% of them. तो बाकी लोग arts और science? क्या split है? Surf science. Okay, surf science. 14%. So 14% of the audience today comes from a science background. That's fine. Now, what about when it came to graduation? Did this split change? Same. 86 and 14. Okay. And what about the last question, the watered down question? How many people are graduates here? Or rather, how many people are students here? 29%. So 29% of the audience are students studying their graduation, probably, or completing their education at the moment. That's good. In key aspiration here, they want to find out, is CMA a good course to do along with my graduation, and then is the first job that I get going to be better than the average ordinary graduates? It surely will be, and I get where you're coming from. Fair enough. What about the second set of audience, people who've already graduated? 29. 29% of the audience is already graduated. So same sort of thought process आपका भी होगा कि यार I've already graduated. Most of you would be working and you're figuring out that the entry level jobs are not that great. So you're trying to find out if there's a course that can be done that will sort of help us take your career to the next level. So I get where you're coming from as well. मेरे को आपकी बात भी समझ आती है. And then what about people who come from people who've done a postgrad or people who've done a master's? Oh my god, 43% of the audience is highly professional. They've done like a postgrad or a master's degree. What about people who got a professional designation? Anybody like that? Nobody like that. So again, the idea is highly qualified log kitne? 43% of the audience. So these guys, the majority, the bulk in the audience are people who are obviously working. Because
highly qualified, right? Post grad bhi ho gayi hai. And you're now trying to figure out, can I do CMA along with my job, and will it input or add any value to my career? If I do it, if I do achieve it, फिर क्या मिल जाएगा? कुछ मिल जाएगा? ये सारी बात मैं समझता हूँ और मैं इसके बारे में बात करूंगा. So let's move straight into the presentation, and don't worry folks, it's not going to be a boring presentation जहाँ speaker किसी कोने में डब्बे में चला जाता. That's not how it's going to be. Instead you'll be able to see me inside the PPT and I will be at Mohit's mercy. Mohit मुझे बड़ा कर दे, छोटा कर दे, side में ले जाए, ऊपर ले जाए, it's his call. That's how it is. So, and he's sort of playing with me as well. So with that being said, it's not going to be the standard boring PPT. Let's move on to our first question, the basic question we should all be asking. What is CMA? So I'm sure you have some notion of it. अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आप CMA के बारे में कुछ तो जानते ही होंगे. Just to make sure that we are clear and we're on the same page, and to make sure I can add a little bit of value to your understanding, I'll give you 3 things about CMA that you should know. CMA is a global certification, a global degree, a global accreditation. And most importantly, CMA is a title that you put next to your name. Like when you see, for example, my LinkedIn profile or my business card or my whatever, it would read Rohan Chopra, CPA, CMA. So these are titles, designations, just like a chartered accountancy designation that you put next to your name. Now, with that being said, I'm not going to tell you कि ये नाम के साथ लगा लो. That's not the point. What I'm saying is, this is a designation of that level. So, इसका जो content है, जो इसकी requirements हैं, जो इसकी effort लगेगी आपकी पढ़ने में, it's all going to be worth it because it has that kind of weightage in the industry. Okay, it is a tag you put next to your name. It is a designation. That's the point. That's why I'm telling you about it. Number 1. Number 2, the thing that I want to let you know is that this degree will allow you to have enhanced strategic thinking. In addition to also having, advanced accounting skills. So of course you will have advanced accounting skills, but accounting is not the only thing that's covered in CMA. This title ka full name is Certified Management Accountant. Management accountancy is the primary field in which you will be certified, in which you will have your degree. But with that being said, it's also much more than that. इसमें forecasting भी है, इसमें strategic financial management भी है, इसमें budgeting भी है. So I'll talk about the subjects in a little bit, but what I'm trying to tell you here is it'll give you not just an understanding of the numbers, it'll tell you how and why the numbers exist the way they are, and that is a valuable skill. देखो आज हम उस दुनिया में जीते हैं जहाँ चैट जीपीटी can do virtually anything that you want done, except a few things. It can't build financial data, financial information, financial models unless you provide the inputs. And you have to provide the correct inputs, वरना मॉडल गलत बनेगा, वरना डेटा गलत डालोगे तो garbage in garbage out होगा. That is the idea. And CMAs have the ability to understand which number should be used, and even if the spreadsheet is telling me it's 18%, a CMA has the ability to understand it shouldn't be 18, it should be adjusted further for risk. We should take this up at a higher number. We should probably have it be 20%, whatever, jo bhi example, jo bhi situation. That's the sort of strategic thinking a CMA will build into you. The third thing that I want to let you know is it is a future-proof qualification. इनका ad campaign तो चल ही रहा है IMA का कि be future-proof with CPA, और आगे हम इसकी बात भी करेंगे. But it genuinely is. That's the way the curriculum is designed. So things like AI, things like ChatGPT, things like whatever technology is the next best technology doesn't end up replacing you. It only complements you. That is the whole point. So CMA के अंदर ये एक added advantage very clearly मुझे दिखता है. That's why despite having a CPA, I further went ahead and did the CMA. That was the logic for it. And I hope I'm able to convey that to you as well. Now, let's move on to the next slide, Mohit. Let's talk about what the certified management accountant profile actually contains. We spoke about management accountancy, right? I told you that certified management accountancy is the full form. Management accountancy is the domain, the field in which we will have our expertise. But what is this domain? So let's talk about that also.
So firstly, you have to understand कि accounting जो है, if you divide it into a flat plane and you take it out into two parts, तो दो domains बनेंगी, एक बनेगी management accountancy, एक बनेगी public accountancy. Management accountancy, as it happens to be, is the accountancy that occurs within the business. So a company does its own internal accounting. That company is at the moment performing management accounting. And the minute a third party, external factor, attests or qualifies the accounting done within the company, it becomes public accounting. अब ये बात शायद समझ नहीं आ रही होगी मेरी, क्या कह रहा हूं मैं सिंपल भाषा में बताता हूं. सीपीए जो पब्लिक अकाउंटेंट्स होते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, वो ऑडिटिंग और टैक्स का काम ज्यादा करते हैं. अकाउंटिंग भी करते हैं और वो अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होती, बट देयर आल्सो इज एन एडेड वर्क, प्राइमरी वर्क टुवर्ड्स ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन. Whereas a CMA is working within an organization to implement, to develop, to improve the accounting, the reporting, the financial planning and analysis that occurs within the organization. So your job essentially is about creating value chains within your organization. That's the beauty of it. So who will be the people who hire CMAs? Who will be the people who will give you jobs? कौन सा एरिया है, कौन सा डोमेन हो, समझ आ रहा है? It's FP&A, financial planning and analysis, very clearly. But let's move on to the next slide and we'll also talk about the companies. But before we do, let's move on to the next slide, Mohit. Let's actually quickly talk about what we do is who we are, you know. तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि यार डोमेन अगर FP&A है फॉर अ CMA, so what are the roles, what are the branches that are available to me? So usually you would find, if you have a multinational organization, the CFO would be somebody who's dually or maybe triple qualified, you know, who's got 3 different qualifications. And a lot of these third qualifications or second qualifications would be a CMA, because CMA, like the name is suggesting, management accountancy में आपको specialize करा देता है. So the the end goal of every aspiring CMA is that with experience, with age, with time, and with the will of God, you will end up becoming a CFO. But एकदम तो कुछ नहीं होता ना. तो start करते हैं तो probably अगर आपका कोई experience नहीं है, if you are zero experienced, then you will probably start off as a fresher. तो आमतौर पे ग्रेजुएशन पे जो नौकरियां मिलती हैं वो बेसिक लेवल की होती हैं, तो उसको हम एनालिस्ट लेवल का रोल कहते हैं. तो एनालिस्ट CMA नहीं होता, वो ग्रेजुएट होता है. But the minute you start qualifying on top of that, you want to move out of the analyst role, become a senior, and then when you want to become a manager, you need a qualification. So we'll start off with two possibilities. You can either go down the costing side of things, क्योंकि वो भी इसका part है, or you can go down to core finance and accounting, FP&A. So you could either be a finance manager or you could be a controller. That's the starting point as a CMA with a little bit of experience. So if let's say you're a college fresher and you do your CMA, so you don't have to join in as an analyst, you can join in as a senior. And if you're already a senior, you're already somebody who's got 5, 7, 10 years of experience, 15 years of experience, then you're looking at a role that is a jump up, is appropriate to you. So the idea is we'll start off at these managerial roles to begin with, and we'll choose our domain, but then it'll all converge back to the VP of finance position. So when you're VP of finance, you could have a domain specialization. You could be VP of finance, but that VP specifically functions for costing. This VP specifically functions for investments. This VP specifically functions for record to report processes, R2R. So there are various domains within this world of management accountancy. The idea is that it all converges back up the corporate ladder to VP of finance. And then of course, with time, with experience, and hopefully with a little bit of luck and a few more qualifications if so need be, you will become a CFO. After a tremendous amount of experience is given to you by working in various places and doing FNA, FP&A, or whatever your domain work specifically may become, you can become a CFO. That's the point of this qualification.
So it's a specialization, yeah, in management accountancy. And a lot of people don't understand that. उनको लगता है CMA छोटी डिग्री होगी CPA से, but ऐसा नहीं है. It's a different type of thing altogether. CPA करने के बाद भी I feel specialization लेनी थी तो CMA की ली. जरूरी नहीं था लेना वैसे, but from a personal professional development point of view, I wanted to take up one more qualification, and CMA seemed to be the right specialization to choose for this very reason, that it focuses you on management accountancy, on understanding what the management wants, what are their strategic points, what is the company's overall objective, and then figuring out how the numbers work, and then trying to see if you can make this all work together, if you can juggle all of these various stakeholders together. That is what CMA is about. Okay, let's move on to the next slide. Mohit. Let's actually talk about what are the companies that actually hire CMAs. तो CMA hire तो कर रही है company, but कौन सी company कर रही है? So firstly, you have to understand all of the companies that are functioning on the basis of US GAAP, and there are a ton of those companies. क्यों? New York Stock Exchange का नाम सुना है? New York Stock Exchange is the world's largest stock exchange. Nowhere else on the planet will you find this amount of wealth being transferred and transacted on a single day. That is how big the New York Stock Exchange is. So the companies that get listed on such a huge stock exchange are not chotu companies or chintu companies. These are companies that are massive. These are multinationals that get listed. मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ मैं बताता हूँ. These multinational companies, for example, India में Tata Motors, HDFC Bank, Infosys, Wipro, these are Indian companies, but they're multinationals and they're listed on the New York Stock Exchange. They have to submit at the end of the year financial statements that are based on US GAAP and that are in dollars. So the idea is, ये इंडिया में टैक्सेस पे भी कर दें, इंडिया में बिजनेस भी कर लें, रुपीज में चाहे ट्रांजैक्शंस भी कर लें, और इंडिया में गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने के बाद ऑडिट भी करवा लें सीए से, तो भी काम खत्म नहीं होता. They then need a CMA to help out with the financial statements, and they then need a CPA to audit those financial statements, क्योंकि दोनों चीजें required है by law. And who are these companies that get listed on NYSE? These are companies that are the largest companies in the world. Before I get into that, let me just talk about the companies that are supporting these FNA, supporting these listed companies in their FNA activities. So listed companies की FNA activities हमेशा जरूरी नहीं वो खुद करें, कभी कभी वो आउटसोर्स करते हैं और कभी कभी उनको बाहर से करवाना ही पड़ता है because the expertise lies outside the company. So companies are, Deloitte, EY, PwC, BDO, KPMG, Grant Thornton. But let me also talk about these other names that may not be very familiar to you, because you should know ये दुनिया की सबसे बड़ी accounting companies की list है practically जो आपके सामने है. These are all multinational companies. Crow is a very big, it's a huge name in the US. It's a huge accounting firm. Crow LLP. Eisenamper, another huge accounting firm. Grant Thornton का नाम तो सुना ही होगा आपने. Then you have Moss Adams. Moss Adams is also a large firm, but more importantly, it's a traditional firm. It's a very American firm. You've got Plante Moron, which is opening up offices in India. So it's probably like the 70th largest company in the US for accounting. But it's already so large that it is an MNC. यार 70वें number पे भी है तो भी it's huge. It's got offices in India now. Ahmedabad में है, and they're opening up in other places as well. Then you've got RSM. RSM is a big six, by the way. BDO को पछाड़ कर RSM और भी बड़ी हो गई है. It's become the big six now. BDO से कम है size में. Then we've got companies like Markham or DHG, which are again not popular brand names जो आपने शायद पहले सुने हो ना सुने हो, I don't know. But these are all the companies that are the largest companies that provide services of FNA to these other brand names. Brand names कौन से हो गए? Brand names वो हैं जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं. ये कंपनियां न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है. ये नहीं है वो कंपनियां. ये उनकी मदद कराते हैं, उनका काम कराते हैं. ये वो लोग हैं. तो इनमें तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. दैट इज वन ऑप्शन, एंड इट्स द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस, द मोस्ट easiest choice. Next up actually is working with the company. So let's actually figure that out. Let's move on to the next slide. Let's look at what are the financial institutions or FNA consulting firms, पहले ये कर लेते हैं फिर institutions, that actually look at CMA for hiring.
सो इफ यू लुक एट हियर, कई नाम होंगे जो आपने पहले देखे हुए होंगे और आपको पता होगा, जैसे जेनपैक्ट है, एचपी है, एक्सेंचर है, कॉग्निजेंट है। इनके नाम सुने थे लेकिन शायद पता नहीं थे काम क्या करते हैं। एफएनए कंसल्टिंग, जो जेनपैक्ट वाला मॉडल होता है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को बोलो कि यार आप अकाउंटिंग क्यों करते हो, अपना पैसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करने में लगाओ, हम आपकी अकाउंटिंग कर देते हैं ना एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। यूएस में सीपीए हायर करोगे, सीएमए हायर करोगे, बड़े महंगे पड़ेंगे, इंडिया में हम कर लेते हैं। और ये मॉडल चलता है, आउटसोर्सिंग यही तो है। ये सारी कंपनियां आउटसोर्सिंग करती हैं या एनेबल करती हैं रादर आउटसोर्सिंग। एंड द पॉइंट इज, बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी किसी को भी अपना काम नहीं दे देगी। They also expect a certain amount of quality. So quality has to be delivered and backed by, again, being a brand and also being aware and being cutting edge and having your employees be well trained. तो ये सारी कंपनीज अगर सीएमए हायर कर रही हैं, that should give you a hint as to the validity of this course. Okay, let's move on to the next slide and talk about the financial institutions that hire CMAs. ये भी वही बात है कि ये कंपनीज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। और मैंने बताया था आपको, इंडिया का बैंक है एचडीएफसी बैंक, हमको लगता है इंडियन है। इंडियन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इट इज लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो इनकी जो अकाउंटिंग हो यूएस गैप बेसिस पर होनी है, इट इज अ लॉ। तो करेगा कौन, सीए थोड़ी कर पाएगा, उसको पता थोड़ी है। यू नीड समबडी हु स्पेशलाइजेस इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। एचडीएफसी बैंक हो या मास्टर कार्ड हो या अमेरिकन एक्सप्रेस हो या एफआईएस हो या पीएनबी पैराबस हो या मॉर्गन स्टैनली हो या वेल्स फार्गो हो या डॉयचे बैंक हो या वर्ल्ड बैंक हो या बार्कलेज हो, they all hire CMAs. That's the beauty of it. And these particular banks, these big brand name banks, are banks that are doing international trade, that are part of banking across the world, that have branches across the world. And as a result, even though they are, in a way localized in the sense कि हर country में अपनी branch है, but they're also huge in size, and this whole accounting and financial data has to come together in one filing to the SEC. वो करने के लिए, वो नंबर्स को क्रंच करने के लिए बड़ी मैन पावर लगती है, बड़ी मैन फोर्स लगती है, और वो अगर क्वालिफाइड हो तो ज्यादा अच्छा काम होता है और ज्यादा जल्दी होता है। एंड दैट इज व्हाई पीपल वो क्वालिफाइड हैव एक्सेस टू बेटर जॉब रोल्स एज अपोज टू प्लेन ग्रेजुएट्स। अगर आप एज अ ग्रेजुएट अपनी पहली नौकरी कर चुके हो और आप सोच रहे हो कि यार ये एंट्री पॉइंट पर काम तो बड़ा बेकार करा रहे हैं मुझसे, तो ऐसा नहीं है। वो इसलिए बिकॉज यू हैव टू लर्न, यू हैव टू फाइंड डोमेन नॉलेज. So a quick way of finding domain knowledge is to study it. The right way to study it is to get certified for it. That's why you want a CMA. That's the point. Okay, let's move on to the next slide. Let's also talk about other brands, Fortune 500 brands that you and I think of owning pieces of. Apple जैसा ब्रांड जिसका आईफोन हमको अच्छा लगता है, या सैमसंग जैसा ब्रांड जिसका सेलफोन आपको अच्छा लगता है, या फिर a company like Intel जिसका प्रोसेसर आप यूज करते हो, और maybe you watch Netflix at night. All of these companies, Dell, Visa, FedEx, Wipro, Microsoft, Whirlpool, Walmart, Philips, there's actually 10,000 brand names here. I can't put any of them here क्योंकि उतनी जगह ही नहीं है स्क्रीन पे. But there's actually 10,000 major brands. And here's an exercise. शाम में किसी भी अच्छे ब्रांड के बारे में सोचना, आफ्टर द वेबिनार ना, सोचना कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, क्या आपको पहनना पसंद है, क्या खाना पसंद है, किसकी गाड़ी चलानी अच्छी लगती है, सोचना। और गूगल पे सर्च करना, आपको दिखेगा वो ब्रांड या तो डायरेक्टली या फिर अपने पेरेंट एंटिटी के थ्रू ऑलरेडी लिस्टेड है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे। और अगर वो वहां लिस्टेड है तो लोकल अकाउंटेंट से उसका काम नहीं बनेगा, वो सिर्फ लोकल लेवल तक ही चलेगा। हैविंग अ लोकल अकाउंटेंट इज ओनली गुड अप अंटिल इंडिया, उसके आगे क्या। एंड देयर आर बिजनेसेस दैट आर वर्किंग अक्रॉस द वर्ल्ड। इंटेल जैसी कंपनी को क्या कहोगे कि सिर्फ इंडिया में ही काम करो, सिर्फ यूएस में ही बेच? वो हर जगह है, और हर जगह की अकाउंटिंग इकट्ठे कंसोलिडेट होनी है, यूएस गैप में होनी है, उसके लिए सीएमए लगेगा। दैट इज द पॉइंट. So I hope that sort of gives you a picture of what are the opportunities, the employment opportunities that are available for you as a CMA. Let's move on to the next slide, Mohit. Let's also talk about the fact that, like I told you in the beginning of the session itself, by CMA as a designation, as a qualification, the coursework is designed to be future proof, so that these new technologies don't replace you, but instead you appreciate how to use them. सो टेक्नोलॉजी का सेक्शन, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, ये सारी बातें सीएमए के सिलेबस में इंक्लूडेड है, पहले ही एडेड है, ताकि आप जब मार्केट में जाओ
ये सारी चीजों की कुछ 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 समझ हो। आई एम नॉट सेइंग ब्लॉकचेन का कोड लिखना सिखा रहे हैं, दैट इज नॉट द एजेंडा। यू आर अ फाइनेंस प्रोफेशनल, बट यू स्टिल शुड नो ना व्हाट इज ब्लॉकचेन, नॉट बिकॉज इट्स नॉट अफेक्टिंग योर लाइफ बट बिकॉज इट इज। क्योंकि ब्लॉकचेन एक्चुअली इज अ पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑफ saving data in multiple subledgers, thereby making it incorruptible, and it is very secure. तो बैंक्स लाइक मॉर्गन स्टैनली आर डिसाइडिंग कि हम ब्लॉकचेन यूज कर लेते हैं ना डेटा स्टोर करने के लिए। और जो ये डेली फाइनेंशियल ट्रेड्स करते हैं वॉल स्ट्रीट पे, उसमें इट इज देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, इज मेटा डेटा इज व्हाट इट्स कॉल्ड, बिकॉज इट्स अ ह्यूज वॉल्यूम। इट्स नॉट जस्ट इन सम टीबीज, इट्स मेनी टीबीज डेली का। तो इसका क्या करें, ये डेटा कैसे स्टोर करें? तो उन्होंने डिसाइड किया ब्लॉकचेन के थ्रू करते हैं। तो ब्लॉकचेन में क्या एंटर करना है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी एंटर्ड इन, ये अब इंजीनियर नहीं बता सकता, इसके लिए फाइनेंस का बंदा चाहिए। That's the point. So we're sort of towing the line. We're not making you computer geniuses, but we're trying to make you computer savvy along with being domain specialized and knowledgeable. That is the agenda with the CMA. Okay, let's move on to the next slide. I don't want to spend too much time here. क्योंकि इसकी बात हम कर ही चुके हैं, तो let's move on to the next slide. Let's actually talk about the exam pattern, क्योंकि अभी तक तो हमने सारी बातें वही करी हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, पर ये सब तब होगा जब पेपर दोनों पास होंगे। That's the most important aspect of you becoming a CMA, कि पेपर दोनों पार करने पड़ेंगे, क्लियर करने पड़ेंगे, एंड इसका कोई जुगाड़ नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, दैट इज द पॉइंट। सो लेट मी टेक यू थ्रू व्हाट इज द सिलेबस। तो देयर एक्चुअली ओनली टू पार्ट्स, मतलब दो ही एग्जाम है इन सीएमए, that doesn't have like 16 or 18 exams. There's just two exams, part 1 and part 2. Part 1 is more about financial planning, it's about performance, it's about analysis, it's about analytics also, and it's about technology, it's about a mix of governance factors also, like internal controls, वो सब भी इसमें included है। So part 1 is actually more about making you aware of what is the external environment, what are the technology tools available to us, and what is the requirement for financial planning and for analysis, which you can now do through tools such as Power BI using data analytics. So analysis and analytics आर बिकमिंग इंटरचेंजेबल इन द इंडस्ट्री, क्योंकि अब टूल्स आ गए हैं जो ये काम करके दे रहे हैं हमको, तो हम भी करवा लेते हैं उन टूल्स से काम, फिर हमें भी आसान पड़ता है। दैट इज द आइडिया। तो वो चीजें क्या है और कैसे यूज होनी है और कौन सी चीज कहाँ फिट होती है, दैट्स पार्ट ऑफ द पार्ट 1। पार्ट 2 इज अबाउट स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस इज कोर अबाउट फाइनेंस। सो अंडरस्टैंड, इसमें अकाउंटिंग ज्यादा नहीं थी, अकाउंटिंग इज ओनली पार्ट ऑफ पार्ट 1। जो पहला सेक्शन है एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस, दिस इज अकाउंटिंग। This is a fancy way of saying financial accounting, and that's it, and that's just one section. तो पार्ट 1 में सिर्फ एक सेक्शन है, 20% ऑफ द सिलेबस इज एक्चुअली अकाउंटिंग, दैट्स इट, लाइक आई टोल्ड यू, द रेस्ट 80% इज मोर अबाउट फाइनेंस एंड यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो इफ यू लुक एट द रेस्ट ऑफ इट, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका अगर सिलेबस देखो तो आपको पता चलेगा रिस्क मैनेजमेंट, डिसीजन एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, प्रोफेशनल एथिक्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ये इस बारे में है, फाइनेंस के बारे में, लाइक आई सेड, उसका टॉपिक का नाम ही स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। So as a CMA, when you look at this content, as a CMA, you will be sort of holistic in not just कि accounting आती है, accounting तो आती है, उसके अलावा 36 चीजें और आती है, costing भी आती है, investment decisions भी बनाने आते हैं, decision analysis भी करना आता है for what are the various options in my business, and at the same time, I have a more holistic understanding of finance, and I also know how to use the latest technology tools to meet my goals. It's a very holistic course in that sense. I really would want to put that out there to you. Now, with that being said, इसका जो exact exam pattern है वो ये है कि there are 100 MCQs in one exam and 2 30-minute case studies. So it's a total of a 3-hour paper. That's it. 2 hours में आप 100 MCQs करने हैं आपको, which is plenty. You have 120 minutes to do just 100 MCQs, and then you got 2 case studies, 30-minute scenario case studies जो आपको clear करने हैं. That's part 1. And then there's part 2, which has the same exact pattern. Part 2 में part 2 के topics में से 100 MCQs, 2 case studies. That's it. 2 exams, a total timeline of timeline की भी बात कर लेते हैं. Let's move on to the next slide. Let's actually talk about the timeline. So थोड़ा सा आगे चलो, थोड़ा सा आगे timeline पे ले चलो एक बार, उसकी बात कर लेते हैं, फिर वापस आ जाओ. Yes, stay there. So let's also talk about the timeline. There's 2 exams, and it's actually a 6.5 month timeline that you're looking at for
qualifying, not just studying, but qualifying the CMA exams, both of them. If you're a working professional or a student, I want you to put in 2 hours daily. तो मेरे को कोई ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप ये जॉब नहीं कर सकते, या आप ये जॉब करते हुए पढ़ाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है. इफ यू कैन पुट इन 2 hours डेली, दिस टाइमलाइन विल होल्ड ट्रू. 6.5 महीने उस फैक्टर को कंसिडर करके कर रहे हैं. एंड अगेन एट एड्यूमॉन्ट व्हाट वी रियलाइज्ड इज, स्पेशली फॉर CMA, even though there is a higher number of student audience that comes in, but we still have a majority of working professionals. तो 60% of the CMA audience at Edumont is working professionals. तो we understand कि आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, पर उसके साथ साथ अगर आप डेली 2 घंटा निकाल सकते हो, तो आपकी ये जो टाइमलाइन मैंने बनाई है 6 महीने की, ये सही बैठेगी. And you will have qualified CMA in just a small short period of half a year. That's it. So if you look at the timeline in a little bit more detail, we'll look at the fact that training के लिए part 1 की कितना टाइम लगता है और सेल्फ स्टडी के लिए कितना लगता है. सो 1.5 months for training, 1.5 months for self study. That's 3 months for part 1. And part 2 is slightly more laborious. So उसमें थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा है in comparison to part 1. तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेता है. ट्रेनिंग में वो 2 weeks लेता है, सॉरी 2 months लेता है. But self study, again, 1.5 months is sufficient. So bringing the total to 6.5 months, 3.5 months for part 2, 3 months for part 1, मिला के 6.5 महीने. Let's go back, Mohit, let's go back to now talking about after the exam pattern, now talking about the study pattern. तो एग्जाम पैटर्न में एक चीज आपने देखी है कि एग्जाम्स जो हैं वो 100 MCQs हैं, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो हम सबको लगता है बहुत आसान होते हैं, और हमारी जनरल जजमेंट भी रहती है अगर कोई पेपर MCQ है तो आसान होगा. आप बताओ, इज दैट ट्रू? पुट इट इन द चैट, लेट मी नो, इज दिस ट्रू? डू यू थिंक MCQs आर इजी? गिव मी a yes or a no, no problem. कोई और बात नहीं भी अगर आपने करनी तो just give me a yes or a no. So विनोद सर कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, I don't think so. Okay विनोद सर, point noted. किरण मैम कह रही है, या किरण सर कह रहे हैं not sure. No. Okay. Okay, I'm getting a lot of no's here. That's good. No, MCQs are not easy. No, no, that's good. Very good. I'm very pleased that a sensible set of audience is available to us today, because हम अक्सर ये गलती करते हैं, हमें लगता है यार ये MCQ तो आसान ही होते होंगे, पर ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. कौन बनेगा करोड़पति का एग्जांपल ले लो ना. द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, बट द लास्ट क्वेश्चन फॉर अ करोड़ रुपीस इज वेरी डिफिकल्ट. तो MCQ है, इससे फर्क थोड़ी पड़ता है. इट्स अबाउट एग्जामिनर किस लेवल की डिफिकल्टी चाहता है हमसे. सो द थिंग इज, CMA एग्जाम को इजी मत जज करो, बट इसको बहुत डिफिकल्ट भी मत समझो, बिकॉज द सिलेबस इज डिजाइंड फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स and is designed to complement your existing graduation or post grad or whatever your existing education. This is an add-on qualification. It's not a qualification that's trying to replace everything. तो इंडिया में आप देखोगे CA जब आप करते हो तो सिर्फ 12th पास भी अगर हो ना तो चल जाता है. You don't have to go to college to do CA today. That's because a degree like CA or an Indian degree like an ICWA or जिसको इंडिया में अब ICMA बन गया, वो भी उसने भी अपना नाम CMA कर लिया है, or a ICSI, which is a CS, these qualifications are designed to substitute your, graduation level की education, your university education. तो ये लोग क्या करते हैं कि ये 16 एग्जाम, 5 साल की ट्रेनिंग पीरियड, इस तरह की चीजें रखते हैं. CM is not designed that way. But with that being said, just because it's not designed that way and because the questions are objective, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत आसान है, और हमें स्टडी पैटर्न जो है उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए. बिकॉज इफ इज MCQs, आंखों के सामने अगर आंसर है तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. मैं बताऊं क्या प्रॉब्लम है? इफ यू आर इंटरेस्टेड आई विल टेल यू. आपने इंडिया में जो भी पढ़ाई करी ना अभी तक, चाहे आपने स्कूल के पेपर दिए हैं या कॉलेज के दिए हैं या जो भी पढ़ाई करी है, PhD भी अगर करी है, तो हम आमतौर पे इंडिया में क्या टेस्टिंग है, एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर दे देते हैं और कहते हैं इसको भरो. क्वेश्चन ये रहा, खाली पेपर ये रहा, खाली पेपर भरो. तो हम जो हमारा स्टडी पैटर्न है वो बड़ा सिंपल सा बन जाता है कि हम किताब लेते हैं, उसको कई बार पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, और फिर वो एग्जैक्ट कंटेंट हम कोशिश करते हैं हम लिख के आ जाएं एग्जाम में. द क्लोजर वी आर, द मोर मार्क्स वी विल गेट. दैट्स हाउ इट इज, राइट, इन इंडिया. बट इन एन MCQ एग्जाम आप आंसर याद कैसे करोगे? आंखों के सामने है चारों चॉइसेस. मेमोरी का जो रोल है इन अ ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग पैटर्न वो बड़ा लिमिटेड हो जाता है.
डू यू अग्री? डू यू सी व्हाट आई एम सेइंग? मतलब मेरी बात, इज इट मेकिंग सेंस टू यू? कि अगर हम ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग पैटर्न ले लेते हैं होलली और क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अप कर देते हैं एज इन कंट्रास्ट विद और एज अपोज टू से स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल एमसीक्यूज, उसको थोड़ा डिफिकल्ट कर देते हैं अगर हम, तो टेस्टिंग पैटर्न जो है तो एमसीक्यू, बट अब मेमोरी का रोल कम हो गया, इट्स मोर अबाउट प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन। क्योंकि याद क्या करोगे, आंखों के सामने आंसर है यार, इन चार में से कोई एक सही है, लेकिन इवेल्युएट करना पड़ता है चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन कौन सी बैठेगी। And that is what this exam is about. It's about evaluation. It's about analysis. It's about application of what you studied. It's not so much about remembering. तो अगर टेस्टिंग पैटर्न बदल रहा है तो हमारा स्टडी पैटर्न बदलना चाहिए। सीएमए के लिए द स्टडी पैटर्न हैज टू चेंज। टू चेंज द स्टडी पैटर्न इज टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि बदलना है क्या। सो किताब का काम, किताब का रोल अब कम होगा। इंस्टेड, because this is a skill based exam, we'll take more time in practicing. We'll practice the skills that are being tested in the exam instead of learning the content in the book. So जो आपका अभी तक का स्टडी पैटर्न चलता रहा, अगर उस बेसिस पर इफ यू आर इमेजिनिंग कि मैं एक दिन सीएमए करूंगा और जब मैं सीएमए करूंगा तो मैं किताब लेके बैठूंगा 4 घंटे और मैं उसको पढ़ूंगा, मैं पेन एंड पेपर से नोट्स बनाऊंगा, ऐसे नहीं होगी सीएमए। होगी ही नहीं ऐसे सीएमए, ये कर भी लोगे तो नहीं होगी सीएमए। सीएमए में स्किल्स टेस्ट की जा रही है। So to make sure that you pass the exam, the only real thing that you have, that you can rely on, that you can sort of bank on, is the skills you develop. एंड वो स्किल्स डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस लगती है, और प्रैक्टिस करनी किसमें है, कहाँ करनी है। सो लेट मी गिव यू अ जनरल रूल। चाहे आप सीपीए पढ़ रहे हो या सीएमए पढ़ रहे हो या आप सीएफए पढ़ रहे हो या आप एफआरएम पढ़ रहे हो या कोई भी अमेरिकन क्वालिफिकेशन आप पढ़ रहे हो, एक जनरल रूल देता हूँ। अपने टाइम को दो हिस्सों में तोड़ दो, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, 1:3 के रेशो में। 1/4 of the time needs to be spent in revising the theory quickly reading through the theory। बात समझ में आ गई ना, इसमें क्या कह रहा है कि बात समझ में आ गई, आगे तो छोड़ दो किताब, बस काम खत्म अब किताब का। now spend the rest of the time, 75% of your self study time, in practicing in the online test bank, OTB। अगर आप में से कुछ लोग मेरे कंपेटिटर्स के पास गए हो या आप सीएमए के लिए मार्केट में ऑलरेडी सर्च कर रहे थे और आप इंस्टीट्यूशंस पे जा चुके हो, तो मुझे चैट में बताओ, क्या किसी ने भी आपसे ओटीबी की बात की? ऑनलाइन टेस्ट बैंक किसी ने भी बताया आपको? बताओ मुझे चैट में, डिड एनीबॉडी टेल यू अबाउट इट? किसी को पहले ये ओटीबी की इंफॉर्मेशन थी? फील फ्री टू पुट इन द चैट प्लीज। अगर हाँ है तो हाँ, ना है तो ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो किसी को पता है, क्या पता है, क्या नाम है? मोहित, could you tell me who's responded yes? And Surya said no, they haven't heard of it. बाकी लोग पता है प्लीज? खुशनाब said yes, उन्होंने सुन रखा था। And somebody said no, so 50-50 स्प्लिट आ रहा है। अभी तो दो ही लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, बाकी लोग भी करो ना यार, चैट में डाल दो ना, जैसे बाकी लोग डाल रहे हैं आप भी डाल दो चैट में। आपने कभी सुना है ओटीबी, ऑनलाइन टेस्ट बैंक? किसी ने बताया आपको कि ओटीबी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है? कोई ऐसी बात हुई आपकी किसी के साथ? बताओ, लेट अस नो इन द चैट। ओके ओके सत्यम, वंडरफुल वंडरफुल, नॉट अवेयर, राइट विंदर सर, ओके। So that's the idea कि I assumed कि अब not a lot of people have responded, but of the majority that are responding, most are saying कि नहीं यार, हमने तो नहीं सुना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में डिस्कस की भी नहीं जाती। स्टडी मटेरियल कौन सा होगा वो तो इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से चूज करती है। बट हियर्स द डील, दिस इज important for you to know, because बस you have to have the right study material। अभी आपने मेरे से सुना कि 75% of your preparation time needs to be spent in the OTB, in the online test bank। तो ऑनलाइन टेस्ट बैंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, किताब से ज्यादा जरूरी ओटीपी है। अब ये ऑनलाइन टेस्ट बैंक सही जगह का नहीं होगा या सही इंफॉर्मेशन से अगर नहीं बना होगा तो आपकी तैयारी कैसे ठीक होगी? हो ही नहीं पाएगी।
And that's where I have to make you aware of the fact that there are different types of providers in the market. कुछ IMA ने अप्रूव किए हुए हैं और कुछ अप्रूव नहीं है. Wiley is the foremost approved partner. In fact, अभी कुछ टाइम पहले और लोगों को ऐड किया है, but Wiley has been the oldest approved partner for content. And that's why Wiley USA, which is an official IMA and an EduMont content partner, is who sponsors our study material for you. And this study material is world class, and it is made by the exact guideline as the CMA syllabus that is sent by IMA, the Institute of Management Accountants. और IMA की guidelines follow होना is one thing. The other thing is making sure that the content that is being provided has the right weightage. जिस टॉपिक की एग्जाम में जितनी वेटेज है उतने हिसाब से ही उसके क्वेश्चंस यहाँ होने चाहिए टेस्ट बैंक में. ये नहीं होना चाहिए कि टॉपिक 1 की वेटेज तो 20% है और आपके टेस्ट बैंक में 40% क्वेश्चंस पार्ट 1 से, तो फायदा क्या हुआ? शुड फॉलो द वेटेज. तो वो भी इंश्योर किया जाता है. दैट इज आल्सो इंश्योर्ड. एंड द बेस्ट पार्ट इज द इंटरफेस फॉर द CMA स्टडी टूल is the exact interface of the exam. So while you're practicing for it, you will get so comfortable with the idea of giving the exam कि एग्जाम हॉल में आपको कुछ अलग या यूनिक नहीं लगे. आपको लगेगा हाँ ये क्वेश्चंस इस तरीके से पहले भी देख रखे हैं. डर नहीं लगेगा आपको. एग्जाम की इंटरफेस अलग नहीं होगी, बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे प्रैक्टिस एग्जाम में, प्रैक्टिस टेस्ट में, OTB में जैसे आ रही थी. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. ओके, विद दैट बीइंग सेड, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. लेट्स टॉक क्विकली अबाउट द स्टडी पैटर्न. वैसे ये स्टडी पैटर्न जो है इसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं ना बैच स्टार्ट क्लास. तो जब भी हम बैच स्टार्ट करते हैं हम एक्सप्लेन करते हैं कि 5 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए. इनके हिसाब से आप पढ़ाई करोगे तो CMA एक अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगी. और ये 5 स्टेप्स जो हैं दे आर डिजाइंड इन सच अ वे, दे आर ऑन द स्क्रीन, यू आर वेलकम टू लुक एट देम, बट दे आर डिजाइंड इन सच अ वे कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है हम इसमें अलग कर पाते हैं. तो स्टेप 1 इज टू डू द क्वेश्चंस फॉर अ टॉपिक. सारे क्वेश्चंस कर लेने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या आता है और क्या नहीं आता है. जो नहीं आता है उसको रीड करो. उन क्वेश्चंस को भी करेक्ट नहीं करो, लेकिन उसको रीड करो. स्टेप 2 में क्वेश्चंस को करेक्ट करना शुरू करो. स्टेप 3 में जब आपको लगता है कि क्वेश्चन यार 2 बार मैं इस पे काम कर चुका हूं, दोनों बार गलत हो रहा है, करेक्ट हो नहीं रहा, तो उस क्वेश्चन को फ्लैग कर दो. देन दैट क्वेश्चन कैन बी वर्कड अपॉन सेपरेटली विद द फैकल्टी. ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कैन समबडी एक्सप्लेन इट टू मी, व्हाई एम आई नॉट एबल टू गेट इट. क्या कारण है कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा, कौन सा टॉपिक मेरा कमजोर चल रहा है जो मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं मैं कर पा रहा हूँ. That sort of assistance is required and it's available and you should take it. That's the point. And then finally you should move on to doing your case study questions. तो कई लोग ये गलती करते हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस पहले करने की कोशिश करते हैं पर वो हो ही नहीं पाते क्योंकि आपने सिर्फ चैप्टर 1 पढ़ा है और केस स्टडी के अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 7, चैप्टर 5 हर जगह के कॉन्सेप्ट है. क्योंकि केस स्टडी है ना, केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए पूरे सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए. सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपको सिर्फ एक ही टॉपिक आता है. तो केस स्टडीज बाद में करो, स्टेप 4. एंड फाइनली मॉक एग्जाम्स. जब मॉक एग्जाम दे दोगे तो देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू एक्चुअली सी कि यार मेरा स्कोर क्या आ रहा है. अगर मॉक एग्जाम में अच्छा स्कोर आ रहा है, 90 95 नंबर आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है. देन यू आर इन अ पोजीशन टू टेक अप द एक्चुअल एग्जाम. और अगर मॉक एग्जाम में 70% आ रहा है या 80% आ रहा है तो फिर बात नहीं बनेगी. तो दैट्स नॉट गुड इनफ. देन यू शुड प्रैक्टिस अ लिटिल मोर. सो अगेन यू आर टू फॉलो द 5 स्टेप्स, बट मैं आपको सिर्फ ये बता दूं और एनफोर्स ना कराऊं तो फायदा क्या है. सिर्फ आप पे छोड़ दूं अगर कि देख लेना खुद ही, तो फिर फायदा क्या है. That's why, wait, let's move on to the next slide. That's why we at EduMart, we built a system that makes sure that you follow this step. वो ये हम बात कर चुके हैं. Let's move on to the next one. Let's talk about this. ये सिस्टम हमने बना रखा है to make sure that you study cohesively and completely for CMA. कुछ छूटे ना, कुछ रहे ना. Number one, you've got classes on Saturday and Sunday, which happen from 10:30 to 2, sorry, from 3 to 6, 10:30 to 2:30 CPA की होती है, 3 to 6, sorry. Next up, in these classes, ये online है, तो you don't have to travel anywhere. You can take these classes from home, but they're an actual class. ऐसा नहीं है कि online वीडियो चल रही है और अब बात खत्म. ना ना, कंप्यूटर पे है, but it is an actual class. You will have to respond. You will have to talk to me if need be. आप questions पूछोगे और आपके साथ में जो और लोग पढ़ रहे हैं वो भी पूछेंगे और हम इंटरैक्ट करेंगे. और जब वो होगा तो आपकी फिजिकल क्लासरूम का जो मेन एडवांटेज है वो तो आपको मिल गया.
विदाउट द ड्रॉबैक ऑफ द फिजिकल क्लास कि यार मेरे को कहीं जाना पड़ेगा, मेरे को तैयार होना पड़ेगा, मेरे को पेट्रोल का खर्चा देना पड़ेगा। और अगर मतलब इफ यू आर जॉब फॉर यू वांट टू वेयर अ मास्क, वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, घर बैठो आराम से घर के कपड़ों में रिलैक्स, टेक अ क्लास। दैट हैपेंस ऑन सैटरडे एंड संडे। एंड देन क्लास तो और भी लोग दे रहे हैं, बट देन वी डोंट स्टॉप देयर। रुकना नहीं है हमें वहां पे कि क्लास तो दे दी, अब मेरा काम हो गया, मैंने पढ़ा दिया, अब जाओ देख लो, जो जो होता खुद कर लो। ऐसे नहीं होता है डिमांड में, यहाँ ऐसे नहीं होता है। बाकी जितने प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री में बाय एंड लार्ज यही एटीट्यूड होता है कि खुद देख लो ना यार, पढ़ा तो दिया है। नॉट हेयर। Here at Edumont, we then further do classes on Tuesday and Thursday, late at night from 10 to 11. अब आपको लेट इतनी रात को क्यों? Because again, I told you, 60% of the CMA audience is working professionals, तो majority of the class is not available during the day. पर रात को 10 से 11 ना ऑफिस खत्म हो चुका होता, डिनर हो चुका होता, तो 1 घंटा हम बैठकर साथ में क्वेश्चंस करते हैं। Questions from the topics that we covered on Saturday and Sunday. एंड क्वेश्चंस करते हुए हम ये देखते हैं कि क्यों आपको 5 मिनट लग रहे हैं इस क्वेश्चन को करने में, व्हाट इज द ट्रिक दैट नीड्स टू बी अप्लाइड टू डू इट इन 2.5 मिनट्स। तो हम वो ट्रिक्स भी आपको सिखाते हैं, टिप्स भी हम आपको देते हैं। बट विद दैट बीइंग सेड, इसका एक एडवांटेज और है। आपने सीएमए की फीस दे दी और अब आप भूल गए और आप भी पढ़ नहीं रहे और हम भी देख नहीं रहे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सैटरडे संडे को आपने क्लास ली, मंडे को छुट्टी है पर ट्यूसडे को फिर क्लास है, वेंसडे को छुट्टी है पर थर्सडे को फिर क्लास है, फ्राइडे को आपकी छुट्टी है हमारी तरफ से, पर सैटरडे को फिर क्लास है। सो वेर इन टच विद यू अराउंड द वीक, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। So even as a working professional, if you just keep up with the training, that will be sufficient to give you the knowledge needed to then start preparing for a subject and passing it. But हम यहाँ भी नहीं रुकते हैं, इसके ऊपर भी एक लेयर और है, which is our safety net system. अगर आप एड्यूमॉन्ट में आके मेरे को कहते हो कि यार मुझे एग्जाम देना है, मैं तैयार हो गया हूँ, तो मैं एग्जाम की फीस जमा करा रहा हूँ, तो हम ये ऐसे इस तरीके से नहीं करवाते हैं काम। हम कहते हैं नहीं, just because you feel you're ready for the exam doesn't mean you actually are. Let's find out if you actually are. तो सीधा एग्जाम की फीस मत जमा कराओ, एक काम करो, पहले वापस आओ, लेट्स चेक योर प्रिपरेशन, लेट्स लुक एट आर यू एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर द टॉपिक और नॉट, एंड देन व्हेन यू आर, you will have our approval, you can pay the fee, you can schedule your exam and you will pass it in one attempt. But if there are issues, we will ask you to hold. यार रुक जाओ, 2 हफ्ता डिले करो अपना प्लान एग्जाम देने का, और इस 15 डेज के पीरियड में ये 3 टॉपिक्स हैं, इसकी एक्स्ट्रा रीडिंग ये रही, इसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये रहे, इनको पढ़ो, इनको सॉल्व करो, जब ये तैयार हो जाएंगे फिर एग्जाम देना। So that's another beautiful thing that we do here at Edumont, not just for CMA but also for our other programs like CPA. We don't want you to fail an exam just because you felt you were ready but actually you weren't. और होता क्या है ना यार, लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि तैयारी नहीं होती उनके एग्जाम में। ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना कि हम एग्जाम देने गए लेकिन हमको नींद आ गई और हम सो गए, इसलिए हम फेल हो गए। हर बंदा अपना एग्जाम जो है पूरी मेहनत देके कोशिश से करता है क्लियर करने की, कमी रह जाती है प्रिपरेशन में, वो चीज चेक करना, दैट इज समथिंग दैट वी डू हियर एट एडुमॉन्ट। These 3 things together, when they work together, this is what makes you exam ready. So that's the special thing about Edumont. Okay, let's move on to the next slide. Okay, let's talk about the program requirements. If you want to become a CMA, what do you need? Can a college fresher become a CMA? Yes, he can, and no, he can't, or she can't, whatever. You know why? Because CMA is not just a blend of what you've studied in the exams you've passed, but it's also a blend of work experience and knowledge. नॉलेज बोलो तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी वन डोमेन वो तो कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर सीएमए के चार्टर में मेंबरशिप मिलती है। बट हेयर्स द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इट, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, या आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो, या आपकी ग्रेजुएशन तो हो गई है बट आपने अभी नौकरी नहीं शुरू करी, वो तो आप सीएमए के बाद करना चाहते थे, तो परेशान नहीं हो। इन ईदर केस, after passing both the CMA exams, you can start looking for jobs, you can start working in them. But to get the charter, you will have to submit these 2 things. And to submit the 2 things, which is experience and your college education, all you have is to submit it. All you need to do is submit it within a period of 7 years.
7 साल है. There's a period of time period of 7 years. तो मान लो यार आप कॉलेज में फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में भी हो और आपके 2 एग्जाम क्लियर हो रहे हैं इस साल या अगले साल, तो कोई स्ट्रेस नहीं है. आपको सीएमए के एग्जाम्स जो हैं उसके बेसिस पर जॉब तो मिलनी शुरू हो जाएगी और सीएमए के चार्टर में मेंबरशिप जो है वो भी मिल जाएगी once you have the 2 years of work experience. And to submit this 2 years of work experience, submit your college education, you have a period of 7 years. So program requirements are pretty lean. सीपीए में अगर आप देखो तो उसमें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आर सुपर हाई. वो लोग मिनिमम चाहते हैं कि आप मास्टर्स करके आओ मिनिमम, तभी सीपीए मिलेगी, वरना मिलेगी नहीं, वरना आप एलिजिबल ही नहीं हो. But for CMA, the bar to entry is a little lower and it's more flexible. So a lot of people choose CMA for this very reason कि यार घुसना आसान है, करना भी आसान है. तो it's not taxing on you as such कि अभी जाओ ट्रांसक्रिप्ट के लिए भागो, सब अभी काम अरेंज करो, पेपर वर्क करो, कुछ नहीं. रिलैक्स. You will have a period of 7 years to do this. दोनों एग्जाम पास हो जाए उसके बाद अप्लाई करना शुरू करना. That's the beauty of it. Okay, let's move on to the next slide. Let's talk about this, which is the fee, the last point in our conversation here. Fees. So CMA exam देना करना, is it expensive or is it easy? Is it cheap? Or is it moderate? वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, आप जज करो. टोटल ईयर अगर आप स्टूडेंट हो, दैट मीन्स यू आर एनरोल्ड विद a university, could be for your undergrad or your postgrad, no problem. But if you're enrolled with the university as a full-time student, तो स्टूडेंट प्राइसिंग आपको बड़ी कम पड़ती है, दैट इज 1,35,000. इफ यूर अ प्रोफेशनल वो 1,70,000 तक पहुंचती है फॉर बोथ स्टडी मटेरियल, ट्रेनिंग एंड एग्जाम. मतलब सब कुछ मिला जुला के टोटल नंबर बता रहा हूँ. बट नाउ हियर्स द वे वी शुड थिंक अबाउट इट. If you're a fresher straight out of college, by just putting in this additional 1,35,000 or 1,60,000, whatever it is that you're putting in, depending on the pricing that applies to you, you will receive a starter salary of about 6 lakhs. So as a college pass out, the first job that you get 2-2.5-3 लाख की होगी. इससे ऊपर क्या 3.5-4 लाख की हो जाएगी मैक्सिमम. 6 लाख की तो नहीं होगी स्टार्टिंग पॉइंट ना. By putting in that additional 135, you get that increment. You get a better job scope, you get a better job role, and you get 3 times the money back within the same year. और आगे लाइफ लॉन्ग जो कमाओगे वो तो रिटर्न आती रहेगी. So it's a massive, a phenomenal return on investment, and that's the point with EduMont. We've only selected courses. मैं CFA की ट्रेनिंग नहीं देता, मैं रैंडम चीजें और नहीं पढ़ाता आपको 36. At EduMont we provide training for subjects, for degrees that we know will give a phenomenal ROI. So both our products, CP and CMA, both of these have been chosen specifically for this purpose. You put in a very limited sum of money, but in return, the first salary you draw will not only recover the cost, it will give you something extra on top of it. अब आप बताओ, अगर आप MBA भी करते हो from a good reputed institution, 20-25 लाख रुपए खर्च के, तो starting salary तो 12 लाख की होती है. So you will have to work for 2-3 years to recover the cost. Whereas with CMA, you do it in 6 months and within the year you recover it. That's the beauty of it. That's why a lot of working professionals also choose CMA because of the economic viability of it. Now, to further break this down, let me also help you with the fact कि इसमें ये पैसा सारा इकट्ठे नहीं जाना है. ऐसा नहीं कि सब एक बार में लो, ये लो जी 1 लाख रुपए, 35,000 रुपए जो भी है ये अभी ले लो, ऐसा नहीं है. It goes in bits and phases. First things first is what you pay for is the study material and the training. That's the first day of enrollment that you pay EduMont or whatever institution you choose for your study material. That's about 84,400. That's the average asking price across the market as well, or we also are honoring the same price, 84,400. इसमें study material और training मिल जाती है. Next up is the exam related expenses, और वो भी almost इतने कहीं हैं, especially if you're a professional. 85K के आसपास की exam की cost है, and if you're a student then it's 51. Now इसमें भी if you look at it, ये जो costs हैं, many of these are compounded together. जैसे CMA exam fees देखो तो part 1 and part 2 is together, पर आपने इकट्ठे नहीं पे करनी होती, आप इसको 1 by 1 पे करते हो, and you don't pay on the first day. IMA membership आते ही नहीं ले लेते. You do your study, you do your course, you feel you're ready to get prepared, you then apply for your IMA membership. You pay $159 or $275. Then you feel यार अभी ये सर्टिफिकेशन का टाइम आ गया कि मैं एंट्रेंस कर लेता हूँ, एंट्रेंस की फी पे कर देता हूँ और अपना एग्जाम शेड्यूल कराने के लिए एक बार अपनी टिकट रेस करा देता हूँ.
Then you pay the $248 or the $280. And then when you are really ready and you've gotten the approval from us कि हाँ यार जाओ अपना एग्जाम शेड्यूल करा लो, then you pay part 1 की fee and part 2 की fee. So it depends on who you are, a student or a professional. 620 and 920, that is the idea. 690, sorry, or 920, that is the idea. And what is the fee per exam? Simply divide this by 2. That's it. Just divide it by 2. You'll get to know the exact cost of part 1 and the exact cost of part 2. क्योंकि फर्क नहीं है इन दोनों एग्जाम की कॉस्ट पर. Next up is the fact that when you pay all of this, you pay for all of the exams, you are down with about 1,35,000, depending on who you are, a student or a professional, or 170. Then, and in this process, how much time has gone through? वही 6 से 7 महीने 8 महीने have gone through. अगर आप एग्जाम और डिले करते हो तो कैश आउटफ्लो भी और डिले हो जाता है आपका. Not that I'm advising you to delay the exam, but I'm just telling you that you pay for the exams as and when you're ready for them. So you don't pay for all of it all at once. 1,70,000 आज नहीं देना. That's the idea. If you can manage the cash flow, that's good enough as well. That's all it takes. And then go out there, dominate the world, get placed, get jobs, get opportunity. The world is your oyster. As a CMA, like I told you, मैंने दिखाई भी कितनी सारी कंपनीज है, कौन कौन से ब्रांड्स हैं, all of them will want to talk to you. That's the beauty of it. When you are a CMA and you apply for a job, you get a call back. इंटरव्यू रूम तक तो CMA की डिग्री ले जाएगी. हाँ, आगे इंटरव्यू रूम में आप क्या करते हो, हाउ यू परफॉर्म इन इंटरव्यू रूम, वो आप पर डिपेंड करता है. और वो आपकी फाइनल आउटकम क्या बनेगी, क्या कौन सी जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, वो सब चीजें उस पर डिपेंड करती हैं कि आपकी इंटरव्यू कैसे जाती है. बट इंटरव्यू रूम तक ले जाने का ही काम होता है किसी डिग्री का. एंड CMA, as it happens to be, is the it degree, the in degree at the moment. And if you have it, that call that you want from the HR is very likely to happen. That's the beauty of it. Okay, with that being said, I'm done. Mera kaam ho gaya. And if you have any questions, anything that you want to ask, now is the time. Feel free to put it in the chat. Feel free to raise hand. आप hand raise कर लो, नीचे Zoom में option है raise hand. आप वो करोगे, मोहित allow कर देगा. आप unmute करो, and then we can talk as if we're talking on a phone. Poll, okay. So I thought you would already release the poll. Okay, let's just quickly release the exit poll. With okay, yeah, let's just do that. There we are. That's the final remarks from you. आप बताओ before we get into the question answer session, आप बताओ आपको ये ठीक लगा, कैसा लगा session? Right, Satyam, we've noticed that you want to talk at the right time. We'll allow you. Just give us a second. Let's everybody have everybody fill the poll first. पहले poll सब भर ले. आप इसमें बताओ आपको हमारे बारे में कैसे पता चला, and more importantly, are you interested in joining CMA or not? How do you like the session? Just basic stuff. Please let us know. एक बार आपके poll भर दो, then we'll get to question answers. So do we have our responses, Matt? 40%. Only 40% have voted so far. बाकी लोग भी vote करो ना यार. Because unless you vote, I'm not going to move ahead to anything else. So even if you don't want to join in, उसमें option है no कर दो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को इस बात से. आप no कर दो, but भरो. That is the point. You have to now bring the session to conclusion, to point of conclusion. We have our responses. Still 20%. 20% लोगों ने अभी भी vote नहीं किया है. Please vote करें. चलो आओ फिर मोहित, अगर अभी के लिए पोल ओपन ही रहने देते हैं, जो रह गए लोग वो टाइम ले रहे हैं, टाइम लेके भर लें, हम बाकियों से बात करते हैं. राइट, आई सत्यम, यू वांट टू टॉक? सो यू. Yes, sir. Good evening, sir. First of all, and it was very nice listening to you, sir, and seeing your well-made presentation. You have taken your precious time for us, sir. It was very nice, sir. Thank you so much. Okay, sir. I just have one question, sir. I did my MBA,
and I want to go into the finance field. So basically, I researched on my own. So I came to about a CFA, Chartered Financial Analyst, and CMA. So which would be best for me right now? Because I have planned CFA, but I'm getting confused between CMA and CFA. मैं बताता हूँ योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड और दोनों जो क्वालिफिकेशंस है ना उसमें सीएफए इज द डीपर एंड मोर यू नो डिटेल्ड क्वालिफिकेशन दैट इज द ऑनेस्ट गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ सीएमए में 2 एग्जाम है सीएफए में 3 लेवल्स है सो उसमें डिटेल थोड़ी ज्यादा है the problem that I find with CFA, the reason why Edumont doesn't train people in CFA today is number one, there's a lot of CFAs out there. तो edge कहाँ रह गई? बहुत लोग हैं. Number two, the biggest factor is it takes 3 years at the minimum. तो CFA आज शुरू करोगे तो 3 साल बाद जाके तो बनोगे. तो रिजल्ट इंस्टेंटली तो मिलेगा नहीं. Okay, sir. As far as CMA is concerned, it's a more short-term course. So if you're willing to put in the sort of time needed to do CFA, I would actually suggest also looking at CPA as an option. Given that you have an MBA, you already have the required credits to meet eligibility for CPA, which is the biggest, point of concern for most candidates. So आप लोग already meet हो ही रहे हैं. You should look at CPA as well as an option then. In that case, if you are looking for something a bit more concrete, CPA की value और CFA की value अगर compare करें तो you'll find CPA has the same exact amount of value. Pay scale is exactly the same as a CFA and it's just as valuable and again takes much less time and is a specialization in the domain of FNA. That's the beauty of it. So it's not just finance, it's also accounting. By the way, even in CFA, ऐसा नहीं कि accounting नहीं है, उसमें भी accounting exist करती है. So accounting से बचना is not the agenda at all. The point is कि वो तो exist करेगी, but in CPA you'll have the same sort of collection of numbers around you that you're looking to analyze, that you're looking to get to help you build that career in finance, but with much less time needed. That's why we choose CPA over CFA as individuals, as an institute. ये दोनों ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मेरे अनुसार. Okay. Thank you, sir. I've looked into it. My pleasure. Okay, what's next, Mohit? We have any other questions coming through? I think कुछ chat में तो आया. Question: if world get too many CMA, then would not it affect on demand and supply equation? हाँ वो तो है ही है. Absolutely. If the world has too many CMAs, तो problem है. But that's the beauty of it, na. The world doesn't have too many CMAs today, especially India. There are not a lot of CMAs. ऐसा नहीं कि हर गली नुक्कड़ में CMA की ट्रेनिंग फैसिलिटी खुल गई जैसे CA के केस में या in case of other more popular qualifications like CA even, or CFA for that matter, or MBA for that matter. These qualifications are popular. तो बहुत लोग करते हैं. तो intake is in lakhs and lakhs. CMA के केस में it's a few thousand people who do it, and those who do it they reap the benefits of it. अब एक टाइम आएगा जब CMA CPA बिल्कुल उतनी ही फेमस हो चुकी होंगी जितनी MBA है, जितनी CFA है, तो ये टेपर ऑफ हो चुका होगा तब तक. तो जो प्रीमियम आज मिल रहा है वो शायद 5-10 साल बाद CMA करने का ना मिले. But that's the case with everybody. You see, thing is, जो पहले मान लो 1 लाख लोग थे ना जिन्होंने पहली बार लाइफ में MBA करी थी, the first 1 lakh people to do MBA, they all would have gotten great payoffs कि MBA उस समय इट चीज थी. उसके बाद जो अब लास्ट अभी जिन लास्ट लोगों ने 1 लाख लोगों ने MBA करी होगी उनको उस तरीके का रिवॉर्ड नहीं मिला होगा. So that's just how it is, demand and supply and also time. Both of these things work. So I hope I'm answering your question. किसका क्वेश्चन था बोलते? Could you tell me the name? विनोद सर का क्वेश्चन था. अर्पम का क्वेश्चन. Correct. Vinod question is CMA certification will help add up required credits for CPA? नहीं सर. CMA एक तो ये somebody I think is on the mic. Could you just remove the permission? हाँ जी. So coming back to the point here कि विनोद सर आपका जो सवाल था, will CMA help with CPA requirements? नहीं, it will not. CPA में in general professional qualifications को consider नहीं करते हैं. जैसे CMA हो या even ACCA हो या CFA हो, इन सबको काउंट नहीं करते. उससे क्रेडिट्स नहीं बनते. CPA के क्रेडिट्स बनाने के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन चाहिए होती है. यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन ही उसके क्रेडिट्स बना सकती है. और 3 और क्वालिफिकेशंस हैं जो फॉर सम रीजन
काउंट नहीं होती है प्रोफेशनल डेजिग्नेशन, हालांकि मेरे को पागलपन लगता है ये, विच इज सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यू है। इंडिया की जो 3 प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है ना, उनको ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन मानते हैं, उनको ये डिग्री नहीं मानते। चलो अच्छा है, उनको क्रेडिट मिल जाते हैं इसी बहाने, हमें क्रेडिट्स नहीं मिलते। लेकिन तो द पॉइंट इज के जो ये वाली क्वालिफिकेशंस होती है ना इस लेवल की, यूजुअली जो डेजिग्नेटेड डिग्रीज होती हैं, इनसे नहीं बात बनती। यू वांट यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यू नो, ग्रेजुएशन, एमबीए, एमकॉम, this sort of stuff, PG diplomas, these things will help out with credits. But again, Vinod sir, if you really have a requirement for, you know, understanding the credits for CPA, feel free to reach out to us. Somebody at the staff will get me connected with you. आपको जब बात करनी हो, reach out to program advisor. They'll connect you and me together. I can then explain it to you in much more detail if you so want to. आपके ऊपर है. If you want to, I'll be happy to explain it to you. Okay. What's next, Mohit? What are the other questions that we can help people with? Arpam says, to be honest with you, sir, I wish to go for CPA, but it's highly expensive as I did CA Inter, and CPA is tough. Two people said, too much people said. No, you are right. CPA जो है, in comparison to CMA, is much tougher because it's almost twice the amount of numbers, but more so, it's also more than twice the level of difficulty. So between the two, if you're choosing between the two based on difficulty level, CMA would be the easier choice, no doubt in that. उसमें मैं मतलब I can't negate you. और CMA कर लोगे तो वैसे तैयारी वगैरह जो होती है ना सब्जेक्ट की, CPA की कुछ हद तक हो भी जाती है. So 20% of the CPA syllabus gets covered in CMA. तो वो भी एक एडवांटेज है इसमें जो आपको मिल सकता है. So if you want to go ahead with the CMA because you find it is more economically feasible to you, and that's a reason why a lot of people do it, kudos, good choice, no problem, go ahead with it. And later on, when you start earning, when you start saving, you can actually choose to do CPA at a later date. Who's stopping you for that? है ना? The initial question is CMA US plus MBA are good combination or Yes, they're a very good combination. And you would have noticed और भी लोग हैं जिन्होंने MBA कर रखी है who are wanting to do CMA because an MBA, like I said, 50 years ago was the it thing. It was the most hip thing you could get. An MBA would give you management training profile at one of the best Indian companies. But times have changed. And MBA is pretty standard now. A lot of people do it. And as such, if you want to really stand out from the other MBAs around you, you want to qualify further. And having a CMA, especially if you're an FNA professional, will actually not only just focus your resume towards showing your FNA side, but will also give you the knowledge needed to stand out and perform better in an interview when other people who you are competing with are also MBAs. So it's not just a good combination, it's actually a value add as well. That's how I'd like to put it. I hope that answers your question. This was Tanushri's question. Right. I hope that answers your question, Tanushri. The question is from Ravindra next. Graduation in arts stream and MBA with HR as major. Further work experience of 15 years in banking still will suffice. Yes, absolutely. Having such high qualifications and like an MBA and a graduation, and then on top of that having experience of 15 years, wonderful. It's you are meeting all the requirements. तो हमें तो सिर्फ 2 years work experience चाहिए आपके पास, तो 13 साल extra reserve में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर. You will definitely be able to meet the requirements. This will truly suffice, no problem at all. What is the next question that I can help with, Mohit? We have covered all the questions. We have covered the questions. Wonderful. अगर किसी के भी कुछ सवाल वगैरह हो तो please feel free to put it in the chat, और अगर ना हो तो that's cool. Thank you so much for giving us the time. Thank you so much for taking out the time and attending this session, giving your valuable feedback to us as well. Wants to talk. Okay, go ahead. Who wants to talk? Sorry, Kushna. Kushna, you want to talk? And we will allow you. Yes. Hi. Yes. Can you show that fees slide? Can we show this fee slide? Absolutely, we can. There we are. I need to understand this IMA membership and certificate entrance fee. At what stage it needs to be paid? Is it need to be paid before appearing for exams? Yes, absolutely, yes. तो ये stage wise ही mentioned है वैसे. If you look at the fee breakdown, first fee you will pay is actually the IMA membership. That's the very first fee you will pay. Then you will pay the exam entrance fee, the certificate entrance fee. Then you will pay the exam fee. तो वो actually उसी order में चल रहा है. इसमें कोई वो नहीं है कि
IMA membership मैं बाद में दे दूं, पहले देनी पड़ती है, because you need to have a membership to apply for exams and you need to have a membership to get your CMA certification as well. दोनों cases में membership चाहिए. That's the idea. And is this IMA membership recurring fees? So IMA membership is a recurring fees for a little while actually. If I explain this to you well, so क्या होता है, while you're giving the exams, first thing you do is you get your membership. This membership that you get is 3 years for a student, 1 year for a professional. तो $275 आप एक बार देते हो, 1 year की membership मिल जाती है. उस 1 year में अगर मान लो आपने सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं किया तो आप सेकेंड ईयर में जाकर फिर फाइनली सर्टिफिकेट अप्लाई करते हो, तो उसकी भी फीस देते हो. After you have your certificate with you, then you don't necessarily have to maintain your IMA membership. You just have to maintain a certificate, जिसके लिए CPE credits होते हैं जो आपको fulfill करने पड़ते हैं. So after a while, you can actually stop paying your IMA membership and you can taper off of it. But for all the important processes, membership is mandatory. That's the idea. I hope that answers your question. Yes, thanks. Thank you. My pleasure. और बताओ, is there anybody else who's got a question? नहीं? Okay, so thank you so much for giving me your time. Thank you so much for giving me your valuable feedback. And with that being said, thank you so much for being here. Have a great weekend. Enjoy yourselves. I will see you shortly, or maybe I won't. Either ways, I wish you good luck. Bye. One more question before we end. Okay. Kiran question is, hello sir, I'm currently in my third year. Okay. Should I complete CMA before third year? So if you're in your third year and you feel you have time, तो कर लो यार, क्यों नहीं? या एक एग्जाम तो अभी निकाल ही लो, सेकंड एग्जाम सेमेस्टर एंड एग्जाम देने के बाद निकाल लेना, तो बेनिफिट तो मिलेगा ही. देखो, I'll tell you, there are two types of people who really benefit from CMA. एक तो वो बंदे who already have a qualification, you know, a designation, a qualification on top of it. They're looking for a specialization, तो वो CMA करते हैं. जैसे CPA plus CMA मेरा केस. Second is people who are in college. They will benefit the most out of this. Why? क्योंकि कॉलेज में अभी जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी भी ना, दे विल बी अंडर पेइंग. उसमें कोई मतलब मजा नहीं होगा और काम भी बिल्कुल लो लेवल से शुरू करना पड़ेगा. तो हैविंग अ CMA डिग्री will actually enable you to find a better job than your peers right now. Not 3 years from now or 4 years from now. Abhi, by the end of the semester, while your friends are starting to find campus placements and, you know, off campus placements. वो तो working with a CA firm ना, but you're probably looking to get to a bigger company like a EY or a KPMG, right? So you want to apply there. There, when you apply, though, as a graduate, as a fresher, it's not a great life. It's pretty laborious. But if you are qualified, you can start off at a better point. And while people your age around you are still, you know, trying to find out campus placements and all of that, you can find a better job. You can already start to make twice as much as your friends. That's the beauty of CMA. While you're doing it in college. तो अगर वो foresight है और अभी कर सकते हो तो कर लो, खराबी नहीं है. I hope that answers your question, Kiran. किसी का कोई और सवाल, कुछ भी पूछना हो तो प्लीज पूछ लें. मैं फिर बाय बोलता हूँ तो उसके बाद क्वेश्चन आएगा तो अच्छा नहीं लगता. It appears as if I don't know what I'm doing. पक्का मोहित, पक्का. चलो ठीक है. If it is actually done, then this is actually a goodbye. Bye everybody. Have a great weekend. I wish you good luck.